This tragedy from Goa that is being reported, a tragic stampede at the Lerai Devi temple in Goa, Shirgaon, that has left at least 7 people dead and over 50 others injured. The devotees that came in from Goa, Maharashtra, Karnataka had gathered for the annual festival, and this incident occurred during the early hours of the religious procession, where overcrowding led to panic and sudden rush of devotees that led to a stampede. The injured, who have been admitted to the Goa Medical College and North Goa District Hospital in Mapusa, where several others who have been reported to be in critical condition. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has rushed to North Goa District Hospital to take stock of the situation, where he has also met with the victims. Now, the authorities are investigating crowd management and the event lapses that may have led to this tragedy. We had an exclusive conversation with the Chief Minister. Let's, in the meantime, get you the details of what all has happened till now. The stampede that has been reported at the Shirgaon temple that has left several devotees dead and many of them injured has sent shockwaves through the coastal state. Now, this incident reportedly happened at around 4 in the morning, where religious gathering that has taken place, as the Chief Minister has also confirmed the timing of the tragedy, assuring swift action. CM Sawant, this Shirgaon temple stampede, how do you look at it? What exactly led to it? 6 people till now dead, more than 50 injured. कैसे? शिरगांव टेम्पल स्टैम्पेड रात को 4 बजे हुआ. ओके. हेलो. हाँ. 4 बजे के आसपास हुआ. ओके. वहाँ पे भीड़ अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों के आसपास भीड़ थी. ओके. हमेशा एक्चुअली एवरी ईयर ये यात्रा होती है. इस बार थोड़े भीड़ ज्यादा थी. एक स्लोपिंग रोड पे कुछ लोग पीछे से यानी क्राउडेड लोग आ गए, तो कुछ लोग आगे वाले गिरे, तो इनके ऊपर एक के गिर के गए, तो स्टैम्पेड हुआ. वहाँ से हमारी पुलिस ने सबको अस्पताल में शिफ्ट किया है, और कुछ लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ मेडिकल कॉलेज में. मैं तीनों हॉस्पिटल विजिट किया हूँ. जिन के ट्रीटमेंट बाकी हम उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट अच्छी तरह से दे रहे हैं. लेकिन 4 लोग हॉस्पिटल में आने से पहले ही एक्सपायर हो गए थे. घटना सुबह 4 बजे हो गई. जो इंजर्ड है वो उनमें से कोई क्रिटिकली इंजर्ड है क्या सीएम सर? इंजर्ड है वो चार लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में है. उनमें से एक ज्यादा अभी इंक्यूबेट किया हुआ है, वो थोड़ा सीरियस है. बाकी लोग ठीक है. उनकी पूरी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं. मैं खुद जाके वहाँ पे उनको देख के आया हूँ. एक आपको ये भी प्रश्न पूछेंगे कि आपने बोला ये एनुअल इवेंट है. लास्ट ईयर भी देखा था कि हमने ऐसा केओटिक सिचुएशन देखने मिला था, बस स्टैम्पीड नहीं हुई थी. तो लैक ऑफ प्रिपेयरनेस गोवा गवर्नमेंट के सरकार से, आपके सरकार से भी देखी जा सकती है इसमें? 100% वहाँ पे प्रिपेयरनेस थी. पूरा पुलिस फोर्स, पूरी सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोग थे वहाँ पे. लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा क्राउड इकट्ठा होके एक जगह पे आ गए, इसलिए इंसिडेंट हो चुका. क्या आप इंक्वायरी बिठाओगे इसमें देखने के लिए? क्योंकि आप पूरे उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं अभी भी, और इंक्वायरी बिठाएंगे भी. अभी भी मेरे पूरे एसपी नॉर्थ, कलेक्टर सभी साइड पे है. Well, let's get on a word from Arunil now. Arunil, you had a word with the Chief Minister. He's admitting that yes, there were lapses and they're looking into it. Till now, what is being said that 7 people unfortunately have lost their lives. Well, that was an exclusive conversation with Goa CM Pramod Sawant. He said the incident occurred at 4 a.m. When the procession was passing through a slope, that is when the situation became uncontrollable. More than 50,000 people had gathered. It clearly mounts pressure on the Pramod Sawant CM Pramod Sawant government, because at this Shirgaon temple, every year annually, a procession is held. Devotees from neighboring states like Maharashtra, Karnataka also throng to this temple during the procession. Was there lack of preparedness from the Goa Sarkar? That question clearly comes to the fore over here. He said that inquiry will be done. PM Narendra Modi has also tweeted about it, offering condolences to the victims, also hoping for a speedy recovery of the injured. Rahul Gandhi, the opposition leader, has also tweeted about this unfortunate incident which has happened in Shirgaon in North Goa, asking questions to the Goa government. Yes, as far as you mentioned, the condolences that have been pouring in, the Prime Minister has also posted where he is now, extending his condolences and the support as well from the government, where he is assured that would be given
the Prime Minister reacting on this tragedy that has been reported in Goa, where the stampede situation had developed, and around 6 to 7 people who are said to have lost their lives, unfortunately, but more than 50 of them are said to be injured. We also heard the exclusive conversation that came in from the Chief Minister of Goa, saying that yes, there has been lapses and they are looking into it. The Prime Minister's message saying that he is saddened by the loss of lives due to a stampede in Shirgaon, Goa. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. And the local administration is assisting those affected. This is the Prime Minister's office. The President of India has also reacted, saying that sad to know about this unfortunate incident of a stampede in Shirgaon, Goa, where several lives have been claimed. I extend my condolences to the bereaved family members and pray for the quick recovery of the injured. That is the message coming in from the Prime Minister's office and from the President of India, where they're extending condolences, and many of the devotees who have been injured as well. The Chief Minister himself has been taking stock, visiting he's been visiting the hospital there. We just had an exclusive conversation with the Dr. Pramod Sawant on what he has to say. What is being said that it was early morning, 4 a.m. when this tragedy struck. CM Sawant, this Shirgaon temple stampede, how do you look at it? What exactly led to it? 6 people till now dead, more than 50 injured. कैसे शिरगांव टेम्पल स्टैम्पेड रात को 4 बजे हुआ. ओके. हेलो. हाँ. 4 बजे के आसपास हुआ. ओके. वहाँ पे भीड़ अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों के आसपास भीड़ थी. ओके. हमेशा एक्चुअली एवरी ईयर ये यात्रा होती है. इस बार थोड़े भीड़ ज्यादा थी. एक स्लोपिंग रोड पे कुछ लोग पीछे से यानी क्राउडेड लोग आ गए, तो कुछ लोग आगे वाले गिरे, तो इनके ऊपर एक के गिर के गए, तो स्टैम्पेड हुआ. वहाँ से हमारी पुलिस ने सबको अस्पताल में शिफ्ट किया है, और कुछ लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ मेडिकल कॉलेज में. मैं तीनों हॉस्पिटल विजिट किया हूँ. जिन के ट्रीटमेंट बाकी हम उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट अच्छी तरह से दे रहे हैं. लेकिन 4 लोग हॉस्पिटल में आने से पहले एक्सपायर हो गए थे. घटना सुबह 4 बजे हो गई. और जो इंजर्ड है वो उनमें से कोई क्रिटिकली इंजर्ड है क्या सीएम सर? इंजर्ड है वो चार लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में है. उनमें से एक ज्यादा अभी इंक्यूबेट किया हुआ है, वो थोड़ा सीरियस है. बाकी लोग ठीक है, उनकी पूरी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं. मैं खुद जाके वहाँ पे उनको देख के आया हूँ. एक आपको ये भी प्रश्न पूछेंगे कि आपने बोला ये एनुअल इवेंट है. लास्ट ईयर भी देखा था कि हमने ऐसा केओटिक सिचुएशन देखने मिला था, बस स्टैम्पीड नहीं हुई थी. तो लैक ऑफ प्रिपेयरनेस गोवा गवर्नमेंट के सरकार से, आपके सरकार से भी देखी जा सकती है इसमें? 100% वहाँ पे प्रिपेयरनेस थी. पूरा पुलिस फोर्स, पूरी सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोग थे वहाँ पे. लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा क्राउड इकट्ठा होके एक जगह पे आ गए, इसलिए इंसिडेंट हो चुका. क्या आप इंक्वायरी बिठाओगे इसमें देखने के लिए? क्योंकि आप पूरी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं अभी भी, और इंक्वायरी बिठाएंगे. अभी भी मेरे पूरे एसपी नॉर्थ, कलेक्टर सभी साइड पे है. Well, at least 6 to 7 people, unfortunately, have lost their lives in this stampede. Their devotees coming from the states of Maharashtra, from Karnataka and in Goa were there for this annual religious procession where the situation turned out of control. The Chief Minister has assured that the investigation is underway in the cause that led to the stampede. We'll be back after a very short.